आज का लेक्चर हमारी कंटिन्यूएशन है प्रोबेबिलिटी के टॉपिक्स की। प्रोबेबिलिटी के अंदर दिस इज़ अ थर्ड लेक्चर इन द सीक्वेंस और होपफुली दिस वुड बी इंशाल्लाह लास्ट। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंटिन्यू किया था विद काउंटिंग टेक्निक्स, जिसमें हमने ट्री डायग्राम, ऑर्डर पेयर्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस के बारे में देखा था। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द एडिशन रूल्स, और स्पेशली वो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जहाँ पे और का वर्ड यूज़ होता है, सो जनरली स्टेटमेंट्स के अंदर जनरली वहाँ पे हम एडिशन रूल्स यूज़ करते हैं। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द मल्टीप्लिकेशन रूल्स, और उसमें हमने एंड के वर्ड का यूज़ देखा था, और उसमें हमारे पास बेसिकली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी, और डिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में एट द एंड हमने डिस्कस ये किया था, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लीड करते हैं। सो फ्रॉम देयर हम आगे कंटिन्यू करेंगे टुडेज़ लेक्चर इंशाल्लाह, और जिसमें हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और उसके एग्जांपल डिपेंडेंट इवेंट्स और के लिए जो मल्टीप्लिकेशन रूल है, बिकॉज हमने मल्टीप्लिकेशन रूल फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो देख लिया था, but now we will see the multiplication rule for dependent events, and finally हम conclude करेंगे with Bayes theorem. So this is the last slide from the lecture, previous lecture, जिसमें हमने डिपेंडेंट इवेंट्स को देखा था, और डिपेंडेंट इवेंट्स को हमने कहा था कि टू आउटकम्स आर सेड टू बी डिपेंडेंट if knowing that one of the outcomes has occurred। ठीक है, कि अगर एक आउटकम हो गई है, एक इवेंट अगर हो गया है, so how does it affect the probability that the other occurs, right? So if knowing that one of the outcome has occurred does affect, it has an impact on the probability that the other is going to occur, जिसके अंदर हमने एग्जांपल्स देखी थी कि ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक एंड नॉट रिप्लेसिंग, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट वाली बात की थी, कि हमने एक कार्ड निकाल दिया। सो प्रीवियसली देयर वर 52 कार्ड्स, नाउ देयर आर 51 कार्ड, जिनमें से आप, और नोइंग के पहला एक कार्ड निकल चुका हुआ है और हमें पता है कि वो कार्ड क्या निकला है। सो अब आगे प्रोबेबिलिटीज़ कैसे चेंज होंगी। हैविंग हाई ग्रेड्स एंड गेटिंग अ स्कॉलरशिप, डेफिनेटली अगर आपके ग्रेड्स हायर हों, सो इस अब आपकी जो probability of getting a scholarship changes। If you do not know कि आपकी grades क्या हैं, so maybe probability of getting a scholarship does not change, is not affected. However, if you already have a prior knowledge that you have, or a student has higher grades, so getting a scholarship, it changes. The probability of getting a scholarship changes. And parking in a no parking zone and getting a challan, this also has an effect. So this has an effect on to this. So ये तो previous हमने क्या था, तो इससे हमने बात ये की थी, so there is something called conditional. So conditional probability, it leads to the topic of conditional probability, और conditional probability की बात वही है कि the first condition, so there is a condition, and this condition basically affects the outcome of the next event. So हम conditional probability की बात करते हैं। So conditional probability of an event A, so conditional probability of an event A in relationship to an event B, right, is the probability that event A occurs after event B has already occurred. इसको हम यहाँ पे देखते हैं. So there are two events A and B. So conditional probability of event A, ठीक है, ये हम event A की conditional probability देखना चाह रहे हैं, given that कि event B has already occurred. So this has happened. ये जो चीज़ है, ये हमारा knowledge है कि ये already हो चुकी है. So B has occurred. So B has occurred
All right. So knowing that B has occurred, so after the event B has already occurred. So all right. So ये चीज़ हो चुकी हुई है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो है वो क्या होगी कि अगर हमने देखने के बी हैज़ अकर्ड, सो इट मीन्स वी only this much, we are now in this zone, and now we want to find out if the event A occurs. This one, what is the probability that event A is going to happen? So given that B has already happened, सो अब ए की हैपनिंग इस एरिया के अंदर ही सिंपल हमारे पास जो है ना वो होगी. इसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी. सो दिस इज़ द नोटेशन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको हम लिखेंगे गिवन बी. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज के गिवन बी का मतलब है कि गिवन बी हैज़ already occurred. Right? So B has happened this much, and now what is the probability that A can happen? Yeah, A will happen. So this is the conditional probability. इसके हम example देखते हैं. So the example is, okay, एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल जो यहाँ पे चूज़ की गई है वो ये है कि 2 psychologists surveyed 478 children, right, in grade 4, 5 and 6 in elementary schools in the Michigan area, right. So total 478 children of elementary schools, grade 4, 5th and 6th में उन्होंने सर्वे किया थे. दे स्ट्रैटिफाइड देयर सैम्पल ड्राइंग रफली 1/3 फ्रॉम रूरल, 1/3 फ्रॉम सबअर्बन एंड 1/3 फ्रॉम अर्बन स्कूल्स. Okay, so this is their method of drawing the samples, how they have surveyed कि उन्होंने randomness को कैसे जो है वो ensure किया है. Among the other questions, they asked the students whether their primary goal, so this is whether their primary goal was to get good grades, number 1, to be popular, number 2, and to be good at sports, number 3. So they are asking students कि उनकी 3 priorities, primary priorities क्या हैं. So the students are either boys or girls. Okay, ये एक division है जिसके ज़रिए उन्होंने आपको ये contingency table दिया जिसमें उन्होंने बेसिकली सेक्स वर्सेस गोल्स जो है ना ये मल्टीवेरिएट आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन दी है सेक्स वर्सेस गोल्स की. सो दिस वेरिएबल सेक्स इज आइदर बॉय और अ गर्ल, एंड द गोल्स आर आइदर गेटिंग गुड ग्रेड्स, being popular, want to be popular, or being good at or to be good at sports. So this is the division जो आपको इस contingency table में नज़र आ रही है. So like out of boys, total boys 117, so there were total 478 students जो कि सर्वे किए गए. Out of them 227 were boys. Okay, और boys में से 117 said that they want to have good grades. First primary priority उनकी 50 की to be popular, and 60 key to be good at sports thing. From out of the girls, 251 girls जो कि सर्वे की गई, जिनमें से 130 की priority 1 was to get good grades, 91 to be popular, and 30 key to be good at sports. So out of total में boys and girls मिला के 247 wanted to have good grades. 141 wanted to be popular as their primary goal, and 490 wanted to be good at sports. So that's how this contingency table is made. अब इसको हम यूज़ करके बात करेंगे कि हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जांपल, टू स्टार्ट विद, अगर हम सिर्फ ये देखने की कोशिश करें कि अगर हम इफ़ वी
take out just one, select a student at random. So what is the probability? So if we select a student at random, okay, so first is selecting a student at random, ठीक है. अगर हम at random जो है एक student को select करें, what is the probability of the student being a girl? Probability of selecting a girl from this is the same, like what is total? Total is 478 and the girls are 251. So probability of selecting a girl student is 251 out of 478, which is like 0.525. 0.525, almost 52% probability है कि that random selection would end up being a student, a girl student. अब हम कोई थोड़ा complicated event एक देखते हैं. Complicated event can be a probability of a girl and with the probability of a girl who also wants to be popular. So what is the probability of being a girl and want to be popular? So among the girls there are 91 students, those who want to be popular. So the combined probability or the intersection of selecting a student at random and having an outcome who's both a girl and who wants to be popular is 91 out of 478, which is almost 19% or 0.19. फाइनली एक और इवेंट देखते हैं कि लाइक अगर हम प्रोबेबिलिटी एक देखना चाहते हैं ऑन द कॉलम साइड, सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ those students who wants to excel at sports. Okay, so total who wants to be good at sports is 90. So among both boys and girls, 90 students want to excel at sports or to be good at sports, and they are out of the total of 478, so it's almost 18.8%. Okay, now we get on to the conditional probability को हम अब देखते हैं. हमने probability of girl students, probability of girl and popular and probability of sports देखी. So the question एक हम pose करते हैं कि what if we are told that the selected student is a girl, जो भी हमने जो selected student है, right, हमने निकाला ये कि probability of sports निकाला कि it is 18.8. ठीक है. इसके बाद अगर हमें ये बता दिया जाए कि जो selected student है, हमने probability हमसे पूछी गई कि what is the probability of having a student who is good at sport, who wants to be good at sports. So हमने उसको 90, total 90 selected to be good at sports. So हमने 90 by 70, 478 करके हमने उसकी प्रॉब्लम निकाली. अगर हमें इसके बाद ये भी बता दिया जाए कि ये जो थे जो स्टूडेंट सेलेक्ट किया एट रैंडम, जो हमने सेलेक्ट किया, who wants to be good at sport, she also happens to be a girl. Okay, she's also a girl. All right,
So would that change the probability that the selected student goal is sports? Now ये हमारी प्रायर probability थी. अब हमें अगर एक और इन्फॉर्मेशन ये दे दी गई कि यार सेलेक्टेड स्टूडेंट जो हमने सेलेक्ट किया है शी ऑल्सो हैपन्स टू बी गर्ल, जिन्होंने जिसका कि गोल जो है वो स्पोर्ट्स था. सो डज इट चेंज व्हेन वी रिस्ट्रिक्ट आवर फोकस टू गर्ल्स? वी लुक एट ओनली एट दी गर्ल्स रो. हमने अभी फ़िलहाल जब हमने सिंपल ये बताया था कि हमारा जो स्टूडेंट हमने जो सेलेक्ट किया है ही वांट्स टू बी गुड एट स्पोर्ट्स, तो हमने ये वाली रो सेलेक्ट की थी जिसमें हमने 90 आउट ऑफ 478 जो ना किया था. लेकिन जब हमें ये बता दिया गया कि वो जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है शी ऑल्सो हैपन्स टू बी अ गर्ल, तो हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन ये आ गई कि हम अब इस जोन में आ गए. ओके, इस जोन में आ गए यानी कि नाउ this 478 is no more there. We have been told that she's a girl. It means that we are now restricted to this size, this sample, like 251. और अब हमारी जो प्रायोरिटी है, अब हमारी जो probability है of having a girl who also wants to be good at sports is now 30 out of 251. So what would be the probability now? Probability of having a student who wants to be good at sports, given that she is also a girl. Now this has already happened. She is a girl, is 30 out of 251, which is equivalent to 0.12. So ये knowledge जो है हमारा, this has definitely changed our probability. This knowledge, the knowledge of a student being a girl has actually changed our probability of जो हम स्पोर्ट्स की probability, स्पोर्ट्स का गोल देखना चाह रहे थे. अगर यही बात हमें बता दी जाए कि the chosen student or the randomly selected student is a boy, so probability of sports being a goal, given that the selected student is a boy or the randomly chosen is a boy, is going to be, now we are restricted to this. It's like 60 out of 227, which is 26%. Okay, so हमारे पास this is what the conditional probability is कि अगर हमारे पास, हमने पीछे इस चीज़ को डिफाइन किया था, so sorry, कि if you know कि event A in relationship to event B is the probability that event A occurs after event B has already occurred. Okay, so this is probability of event A given that B has already occurred. Okay, so that's called conditional probability. यहाँ पे वो एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हुए, सो हमने देखा था जैसे पहले probability of A given B, उसको भी हम देख सकते हैं इस तरीके से, और probability of B given A को भी देख सकते हैं. So
that is equivalent to, यहाँ पे हम देखें probability of A given B, जैसे यहाँ पे दिया गया probability of A given B has already occurred, B is already occurred. अब उसमें A अगर हो सकती है सिर्फ इस एरिया में, which is basically the intersection of A and B. So A and B की intersection out of the whole divided by probability of B. ये normalization है इसकी. So probability of A given B has already occurred is the intersection of A and B out of the whole probability of B. So that's how we find our probability of A given B. So probability of A given B is equal to probability of A and B divided by probability of B. और opposite अगर probability of B given A हम देखें तो it will be probability of A and or intersection B given that A has already occurred. So vice versa. So probability of sports given that she is a girl is, जैसे हमने पहले पिछली दफ़ा देखा, अब हम उसी चीज़ को पहले हमने टेबल से देखा, we found out to be 30 out of 251. So A sports and girl की probability last time हमने find out की थी, it would be 30 out of 478. Sports and girl, ठीक है. Sports and girl means it would be 30 out of 478. Sorry, 30 out of 478. And probability of girl is 251 out of 478, or ultimately it comes down to the same 0.12. इसी तरह से probability of girl given popular is probability of girl and popular कौन सी है, 91 out of 478, and probability of being popular is 441 out of 478, so that comes out to be 4.65. इसी फार्मूला को आप ऑल्टर कर सकते हैं अगर हम probability of A को दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई कर दें. So A and B जो है आपके पास, या A intersection B is like probability of A times probability of B given A, या फिर इसी को हम equal to probability of B times probability of A given B. ये दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं. So that's how हमारे पास ये conditional probabilities हैं. और ये हमारे पास एक और फार्मूला आ जाता है based upon the conditional probabilities को हम यूज़ करते हुए for intersection फाइंड आउट कर सकते हैं. So now this leads us to the multiplication rule 2. और मैंने आपको पहले बताया था multiplication rule 1 हमने लास्ट लेक्चर में देखा for independent events. So this time it is for dependent events. So dependent events के लिए जो multiplication rule है, it is when two events are dependent, the probability of both occurring A and B is equal to A times probability of B given A, and or the same way probability of B given times probability of A given B. अगर आप remember करें the multiplication rule number 1, multiplication rule 1 was dealing independent events, और उसमें probability of A intersection B was given as probability of A times probability of B. So it was for independent events, but for dependent events अब हमारे पास दूसरी जो है probability होगी, like probability of A times probability of B given that A has already occurred, or the same way probability of B times probability of A given that B has already occurred.
सो एग्जाम्पल इसकी एक देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस ऑन द फर्स्ट ड्रॉ, यानी कि आप एक द फर्स्ट टाइम जो आप कार्ड निकालें, फर्स्ट ड्रॉ का मतलब है कि फर्स्ट ड्रॉ का मतलब है कि पहला कार्ड आपने निकाला बाहर, तो एंड अ किंग ऑन द सेकेंड ड्रॉ, एग्जैक्टली कि फर्स्ट आपका एस निकले और फिर आपका किंग निकले। सो इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ज़रिए सॉल्व करेंगे कि फर्स्ट ड्रॉ पे तो आपका एस निकला, सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस ऑन द फर्स्ट ड्रॉ, एंड देन गिवन दैट कि फर्स्ट पे आपको एस मिला, उसके बाद सेकंड कार्ड आपका किंग आए, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो यहाँ पे निकाली जाएगी, बिकॉज नाउ इट इज़ अ डिपेंडेंट इवेंट, ये दोनों इंडिपेंडेंट हरगिज़ नहीं है। पहले पे एस और दूसरे पे किंग का मतलब है कि पहले पे एस लाजमी हो और उसके बाद किंग निकले। सो व्हाट इज़ गेटिंग एन एस इज़ फॉर प्रॉब्लम 4/52। जब आपने एक एस बाहर निकाल दिया तो रेस्ट नाउ देयर आर ओनली 51 कार्ड्स लेफ्ट। सो आउट ऑफ दोज 51 देयर आर ओनली 4 किंग्स। सो अगर हम इन दोनों प्रॉबिलिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास लेस देन 1% आपके पास इसकी प्रॉबिलिटी आती है। सो वी मूव फॉरवर्ड। एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है विच विल लीड अस टू define formally the definition of Bayes theorem. It is called the law of total probability. Law of total probability को समझने के लिए आप इस डायग्राम को मैं 1 by 1 ड्रॉ करता हूँ। ये आपके पास टोटल सैम्पल स्पेस है, ऑलराइट, यानी कि जितने भी इवेंट्स हमारे एक्सपेरिमेंट में हो सकते हैं, उनकी जितनी भी आउटकम्स हैं, ये उनकी सैम्पल स्पेस को डिनोट कर रही है। उन सैम्पल स्पेसेस के अंदर लेट्स से आपके पास कोई 4 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। ये मैंने यहाँ पे डिवाइन कर दिया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि आपस में देयर इज़ नो ओवरलैप, कि दिस इज़ इवेंट A1, दिस इज़ इवेंट A2, दिस इज़ इवेंट A3 एंड दिस इज़ इवेंट A4। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब है कि टुगेदर दे मेक अप द होल सैम्पल स्पेस। अगर आप इन सब को आपस में ज्वाइन कर लें, इनकी यूनियन कर लें, तो यू वुड गेट दी फुल सैम्पल स्पेस। दिस इज़ कॉल्ड एग्जॉस्टिव। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि इनका आपस में कोई ओवरलैप नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ योर these are your 4 इवेंट्स। अब इसके अंदर हम लोग एक एडिशन जो हम करते हैं वो ये है कि now we have another, let's say, event which is drawn in the blue color, और ये event जो है हमारे पास, this event we call it as B, okay। so probability of B, ये B हमारा event of interest है। तो probability of B जो है वो हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। बी इवेंट भी इसी सैम्पल स्पेस का ही इवेंट है, लेकिन उसका ओवरलैप है कुछ के साथ या सब के साथ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है बेसिकली वो हमें मिल सकती है अगर हम बी की इंटरसेक्शन देख लें A1 के साथ, बी की इंटरसेक्शन हमें मिल जाए अगर A2 के साथ, बी की इंटरसेक्शन हमें अगर मिल जाए A3 के साथ, और बी की इंटरसेक्शन अगर हमें मिल जाए A4 के साथ, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है उसको हम इन टर्म्स ऑफ इट्स इंटरसेक्शंस विद ऑल द एज, जितने भी एज हैं उन सब की इंटरसेक्शंस के साथ जो बी की इंटरसेक्शन है उन सब को हम अगर ऐड अप कर दें तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल जाती है, ठीक है। और पीछे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ में हमने यहाँ पे इसको डिफ़ाइन किया था इस तरीके से।
ये जो हमारी डेफिनेशन थी, दिस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन या फिर ये डेफिनेशन, ओके। इन डेफिनेशंस को अगर हम रखें, ए एंड बी बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी ही है, तो हमें क्या पता चलता है? एक डेफिनेशन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, इनको हम मल्टीप्लाई कर लें, सॉरी, तो हमारे पास ये बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। सो दिस इज़ आवर टोटल प्रॉपर्टी कि अगर A1 से ए के, ये जनरलाइज कर दिया, यहाँ पे A4 तक डिफाइन किया हुआ था, लेकिन अब ए के कोई भी जनरलाइज आपके पास events हैं which are mutually exclusive and exhaustive, then for any other event B, जो total probability जो B की निकलती है वो क्या is the sum of all the conditional probabilities of B given that A1 has happened, given that A2 has happened, given that up to AK has happened. So उन सब probabilities को अगर हम add up कर लें तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट जो है वो निकल आती है। सो दिस इज़ द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये यूज़ हो गया कहाँ पे? आगे हमारे बेस थ्योरम के अंदर। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव गॉट हियर। सो दिस इज़ व्हाट द बेस थ्योरम सेज। बेस थ्योरम जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ही डिफ़ाइन कर रहा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने पहले आपके सामने अभी तक जो हम लोग करते आए हैं वो हम डिफ़ाइन यहाँ पे कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए given B is equal to probability of A intersection B divided by probability of B। ये हमने डिफाइन किया था, ठीक है। अब हम उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, आप ये देखें नीचे। अगर हम उसको पार्टीशन करें B को, सॉरी सैम्पल स्पेस को, ये वही सैम्पल स्पेस है, अगर हम उसको A और A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, दो उसमें हम कर लें, तो इसका मतलब है A और A कॉम्प्लीमेंट हमेशा एग्जॉस्टिव होंगे और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होंगे, ठीक है। तो ये उसका एक सिंपल वे ऑफ पार्टीशनिंग है जिसमें आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव मिल जाते हैं। और दूसरा आपके पास बेसिकली ये इवेंट लेट्स से हमारे पास B है, ठीक है। सो हमारे पास B के जो बनेगा टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A ये वाला हिस्सा टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A कॉम्प्लीमेंट टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, ये फ्रॉम टोटल प्रोबेबिलिटी से आपको मिला है। दिस इज सेम, एग्जैक्टली द सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ओके। और A इंटरसेक्शन B जो है, मैंने आपको बताया था कि A इंटरसेक्शन B आपके पास दो तरीक़ों से, बिकॉज A इंटरसेक्शन B वही चीज़ है जो कि B इंटरसेक्शन A है, बिकॉज ये दोनों बिल्कुल सेम चीज़ होती है। तो आपके पास ये दो तरीक़ों से आ सकता है। किस तरीके से कि A गिवन B टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B और probability of B given A times probability of A, okay। so यहाँ पे A intersection B जो है, A intersection B पे it can be this or at the same time it can be this also। so हमने यहाँ पे A intersection B में यहाँ पे A given B को हम निकालना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे उसका दूसरा probability of A times probability of B given A यूज़ किया, ओके। अब इसमें टर्मिनोलॉजी अगर हम एक दफ़ा देख लें, टर्मिनोलॉजी जो है वो क्या यूज़ हो रही है, वो ये है कि प्रायर और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज़। कैसे?
ये आपके पास एज हैं. Okay. So let A1 to up to AK be a collection of K mutually exclusive and exhaustive events with prior probabilities P of AIs. यानी कि इन सब इवेंट्स की आपके पास प्रायर probabilities मौजूद हैं. लाइक जिस तरह से A और A कॉम्प्लीमेंट की यहाँ पे मौजूद है. ये सिर्फ दो का केस है, ये जनरलाइज K का केस है. देन फॉर एनी अदर इवेंट B, कोई भी और इवेंट है जो कि हमने यहाँ पे ब्लू से डिफाइन किया था. दिस इज एन इवेंट B, ठीक है. एनी अदर इवेंट B for which probability of B is greater than the posterior probabilities of A's a given B has occurred. हमारे पास इंडिविजुअल A's की तो थी. अब पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज़ हमने फाइंड आउट करनी है इन्हीं एज की गिवन दैट बी इज अकर्ड. हमें बी की प्रोबेबिलिटी भी पता है. अब हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल दीज एज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज, हाउ दे हैव चेंज्ड. ऐसे ही है जैसे हमने पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स बीइंग अ गोल देखा और फिर हमने कहा कि व्हाट इफ कि हमें ये बताया जाता है कि जो रैंडम सैंपल किया हमने स्टूडेंट, शी हैपन्स टू बी अ गर्ल. तो हमने कहा कि नाउ हाउ डज दिस स्पोर्ट्स गिवन द गर्ल इज चेंज्ड, हाउ द प्रोबेबिलिटी हैज चेंज्ड इन दिस केस. सो हमें एज पता है, प्रायर प्रोबेबिलिटीज हमें एज की पता है. हमें पता चल जाता है कि बी यानी कि गर्ल, हमें पता चल गया कि बी इवेंट हैज़ अकर्ड, इट इज़ ऑलरेडी अकर्ड. सो हाउ इट हैज़ चेंज्ड the prior probabilities of A's. Okay, so ये है जो कि बेस थ्योरम जो है वो बात करता है कि हमें पोस्टीरियर probabilities पता चलती हैं कि A's की probabilities, इन A's की probabilities कैसे चेंज हुई हैं given that कि हमें ये पता चल गया कि B has occurred. Okay, so B's को हम टोटल probability लॉ से या अगर हमें पास एग्जैक्टली दी हुई है उससे हम फाइंड आउट कर लेते हैं. और हमें ये भी पता चल गया कि बी गिवन एज की प्रॉबिलिटी के बी कंडीशनल और ए और प्रॉबिलिटी ऑफ ए, ये जिन्हें हम प्रायर प्रॉबिलिटीज़ कह रहे हैं, ये हमारे पास पता हो तो हम पोस्टीरियर प्रॉबिलिटी ऑफ एज जो है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. इट्स इज थ्रू बेस थ्योरम. सो दिस वाज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी चैप्टर. और इसमें बेसिकली हम इसको समराइज़ कर लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर के अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में देखा कि कंडीशनल ए गिवन बी या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, उसकी एग्जांपल्स देखी. हमने मल्टीप्लिकेशन रूल देखा डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, हमने टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ को देखा और फाइनली हमने बेस थ्योरम को डिफ़ाइन किया. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे, विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक जिसमें हम रैंडम वेरिएबल्स और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच.